You can go to the my YouTube channel. Sir, link. Just if you search on the YouTube engineering physics by Professor B.K. Pandey, then you will go. Otherwise, I will share the link for the same also. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So what I was discussing on the last turn, that the conservation, some conservation laws must be discussed whenever we are discussing about the issues related to the classical mechanics, especially. So conservation of energy here, there is the work done by the external force F on a particle, displacing it from point 1 to 2 is defined as W12, and this is equal to 1 integral 1 to 2 F dot dr. There is nothing new, already you people have read it. The work done is equal to the force multiplied by the distance in the same direction. And if it is not in the direction, then you will take the component of the force in the direction of the displacement. And more accurately, we used to have the integration that along a particular path and trajectory, if we don't know that either it is a straight or it is in the curve, then uh, we will divide it in the different segment and we will take the sum of that from one position to the other position. That's where the entire work that can be appear in terms of energy. Just we are taking the example, consider a massless string going over a frictionless pulley. Blocks of masses M1 and M2 are attached at the end of the string. Such system is called the etude machine. You might have read in your lower classes also. Find the acceleration of the blocks and the tension in the string. So friends, what I'm trying to discuss with you people here, if we have the string and the masses are there, then obviously they will be they will have their own weight and they will be attracted towards the downward direction, and what will the effect will be on other. So all these things we have to know clearly, and we should know that what will happen actually, since these masses are working on each other. That's why they will be just as a machine that we know it as the etude machine. So let us see that example. Just I'm discussing this important aspect because in the classical mechanics, pulley, string, masses, and their motion, they are the big issues. And there are so many problems related to this one. But the fundamental concept is there. We have to see the conservation of the energy and momentum, and according to that, we able to solve the problem there. So just we are taking here, if you will see the figure here, then you might have seen that there is a pulley, and ideal condition has been taken here that the string has no mass and pulley is the frictionless, and M1 mass is at the left side and M2 mass is at the right side. Obviously there will be the tension because both are hanging towards the downward direction. That's where the tension has been mentioned here in the upward direction. So obviously M1 is the mass of first body, then its weight will be M1g in the downward direction. Similarly, there will be the M2g, that will be the weight of the mass M2, which is also the downward direction. But for your kind information, the motion will be only possible up to the balance situation, or the equilibrium condition will be reached there. And equilibrium condition means that obviously the force, mass, force, weight will be balanced by each other. Force, whenever we are talking about the force, then it is some sort of momentum. But if the force is the rate of change of momentum. And whenever we are talking about the masses and corresponding weight, then that is corresponding to the energy, because mg refers to the
the force by which it has been dragged towards the downward direction. So here we have taken if m2 is the greater than m1, ये कंडीशन ले ली गई, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई टेंशन, किसी भी तरीके का कोई डाउनवर्ड फोर्स, इन सब के बारे में हम आइडिया नहीं ले सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट किया, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट किया। कैसे? m2 इज ग्रेटर देन m1 एंड द t इज द टेंशन, क्योंकि जो पुली है, pulley is common between m1 and m2 because it is joining m1 as well as m2. That's why same string is there, that's why the same tension will be there. So and t is the tension in the string, then according to the Newton's second law of motion, of two masses are t1 minus m1g is equal to m1a. Actually the motion of m1 and motion of m2 will be defined in terms of the unbalanced force between their weight and tension. According to that, they will go in upward direction, they will go in the downward direction. अच्छा, ये upward direction और downward direction क्यों जाता है भाई? कोई भी मास upward direction और downward direction क्यों जाता है अगर इस तरीके की सिचुएशन है? सर अगर दूसरे का मास ज्यादा है और जो mg फोर्स है, मान लीजिए m2 का मास ज्यादा है और mg फोर्स ज्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली m1 के मुकाबले, तो m1 जो है वो अपवर्ड जाएगा और m2 उस केस में नीचे आएगा। क्यों जाता है? क्यों जाता है सर? सर क्योंकि जो ओवरऑल नेट फोर्स होगा सर वो m2 की डायरेक्शन में लगेगा और m2 क्योंकि नीचे जा रहा है तो सर क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच्ड है m1 तो m1 ऊपर जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ना, इसका एक सिंगल सेंटेंस में आंसर यही है कि ये सिस्टम बैलेंस कंडीशन में जाना चाहता है। यस सर। और बैलेंस कंडीशन में जाने में आपने किसी का जो एनर्जी की बात करी होगी, तो मान लीजिए m पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसका जो एनर्जी होगी, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम सेट करें तो क्या होगा? mgh। अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब कि इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा होती जाएगी तो ऊपर जाते जाते एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टेंशन लग रहा है तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो बिकॉज द एनर्जी हैज बीन बैलेंस एंड कंजर्व की, इसको जब इसकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी और तभी ये रुकेगा, उसके पहले ये रुक नहीं पाएगा। So if I am asking that why the motion is there, only you should have the scientific reply for the same, that to balance the energy of the system so that the equilibrium and balance condition should be reached, one mass will go downward and other will be in upward direction. Although your explanation is also scientifically good, but at your level, it is expected such type of answer is there, because it shows that you are understanding the situation of this pulley, mass and tension, all those things. Anyway, so T minus M1G is equal to M1A, कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स का डिफरेंस होगा वही फोर्स इस पुल्ली को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। That's why T minus M1G is equal to M1A. And similarly, we will talk about the other. Then here M2 is greater. That's why M2G have the more value. That's why minus G will be there. Or you can say that the mass M2 is coming downward while the M1 is going to the upward direction. That's why the convention of the sign will be different in comparison to the other equation. Where A is the acceleration. देखो स्ट्रिंग, अच्छा ये बताइए कोई इसमें कि ए दोनों के केस में बराबर क्यों है? ममता बताइए कि दोनों के केस में ए बराबर क्यों है? स्वाति? तो बेसिकली फोर्स स्ट्रिंग की वजह से है और एक ही स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग तो एक ही है ना, कॉमन है। तो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी, हाँ कांस्टेंट मोशन की वजह से, क्योंकि
अगर मान लीजिए हम कह दें कि पहले वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो पता लगा कि आपकी स्ट्रिंग ही बीच में ढीली पड़ जाएगी। तो इसमें जो है कांस्टेंट मोशन है, इसलिए दोनों का जो ए है एक्सीलरेशन है वो बराबर होगा। तो where a is the acceleration which will be same for the two masses because the string is continuous. Adding above equation, we get m1 m2 minus m1. Just this is the mathematical manipulation, and t will cancel out, and m2 minus m1 into g is equal to m1 plus m2 into a, and finally a is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 multiplied by g. Putting the value of a in the equation one equation would be written there in the upward direction. So we get that the T1 minus M1G is equal to M2 minus M1 upon M1 plus M2 into G. And hence, finally, we can calculate that what the value of the tension will be there in the string. So just I'm giving this idea that how to solve and how to approach to the problem like this particular example. So I think this was the left. These were the left slide in the last lecture. So today I will start the next lecture here. Lecture number 21. In this lecture, again we will discuss some aspect related to the conservation laws. I think screen is shared now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us have the concept of the kinetic energy and work energy theorem. Also, you might have read in your classes, just to revision point of view and just to discuss an application point of view, we should discuss this once again. Because this is the part of our syllabus, just not I'm revising, just I'm taking it as a part of our syllabi. So according to the Newton's second law, we might have seen that F is equal to m dv upon dt into dr. You can see here, this is right or not? Let me know. बताइए भाई। Yes, sir. सही है। तो F is equal to ma होता है, ये dr क्यों आया हुआ है इसमें? Yes, sir. फर्स्ट वाला नहीं सही है, दूसरा वाला सही है सर। फर्स्ट वाला नहीं सही है, दूसरा वाला सही है। क्यों भाई, कैसे होगा? According to the Newton's second law, m into dv upon dt into dr. तो ये कैसे लिख दिया गया भाई? कोई बताए आप लोगों में से? बोलो भाई। आप लोगों में से कोई बताए? सौरभ जी, क्या गलती है इसमें? सौरभ, धारणी इसमें क्या गलती है? सर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा तो dv बाय dt तो एक्सीलरेशन होगा, बट dr सर dr तो एक डायरेक्शन को शायद शो कर रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्शन मतलब dr को मेंशन करना, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, बिकॉज़ then what is the wrong with this one? Only the wrong is there that in the left hand side there should be the multiplication by dr. Yes, sir. That has been left there, na? Yes. That's why this equation is not right now, na? Yes. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में dr से मल्टीप्लाई कर दें तब ये इक्वेशन सही हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. Only this is the mistake here, and you should write it as df vector f dot dr is equal to m dv upon dt into dr. Means that this should be like this. Here we must have the equation like this one. Here we should have this one. Now it is correct. Although
here we should have this. This is in the form of vector. So better to write it as this. So I think now it is right. Yes, sir. Now it's Sir. right. So friends, just I was discussing this one since this was not correct. That's why it was essentially required that we should correct it. And in order to balance this in this way, let us write it in this way. So now F dot dr means that it is work, or you can say it is the energy, and this is equal to m times dv upon dt into dr. Only we have written the value of the force there, and m dv upon dt into v dt. Let us see it on the right hand side in the bracket what I have written. Okay, dr is equal to dr upon dt into dt, and just we will write dr upon dt as a v, and this is vt. So in place of dr we have taken a v times dt. So now what we are getting actually m times d by dt of half v into v. Deepmala is there or not? Deepmala? Yes, sir. How we are writing this equation? Can you tell me? That m d by dt of 1 upon 2 v dot v dt, how we are writing this for the above equation? श्याम जी है क्या? यस सर। कैसे हमने इसको लिख दिया भाई ऊपर वाले इक्वेशन की जगह पे? अरे आप लोगों को हमने 3 दिन पहले ही सभी स्लाइड शेयर कर दी। अंतर केवल इतना ही था कि उसमें हैंड रिटन का मैंने पीडीएफ से फोटो खींच करके लगाया था, इसको मैंने मेहनत करके टाइप कर लिया है। तो आप लोग इसको मतलब उसे पढ़े नहीं, बस जस्ट आई हैव शेयर्ड एंड यू हैव स्टोर्ड इट इन द डार्क रूम। बताओ भाई स्वाति कैसे लिखे इसको? So when we'll differentiate half v dot v तो same वही आएगा dv by dt into v. कैसे आएगा? बेसिकली ये v स्क्वायर, पहले v स्क्वायर लिखा जाएगा। हाफ v स्क्वायर में v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये हाफ कट जाएगा और बाद में ये v टाइम्स dv upon dt. तो these are the simple mathematical formula. Just I have taken I have written at is. इसको कैसे लिख दिए भाई? सुरभि है क्या? यस सर। सुरभि इसको कैसे लिख दिया हमने? सर इसमें जो dv by dt को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसमें हाफ m की टर्म्स अंदर चल गया है तो इसमें क्या हुआ? क्यों अंदर चला गया? कैसे? हाँ सर dv dt डिफरेंशिएट सर। अरे अगर सिंपल बात करो तो dt कट गया, हालांकि कटता नहीं है। हाँ तो dt कट गया तो d बचा है यहाँ पर। यस सर। और उसके बाद जो है m को अंदर क्यों कर दिया? क्योंकि m कांस्टेंट है तो कहीं भी रहे उसके डिफरेंशिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो दैट इज जस्ट एज अ मल्टीप्लायर। ओके, तो therefore the equation of the work can be given as W12। देखो अब यहाँ वर्क किया गया क्योंकि शुरू में वो गलती थी, हमने वर्क से ही शुरू किया था, but by mistake we have written only F there। तो work done from 1 to 2 is equal to 1 to 2 F dot dr is equal to 1 to 2। जो हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है कि d विद इन ब्रैकेट हाफ mv स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर दिया गया
और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है इसको केवल एक क्वांटिटी मान करके अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कुछ भी वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में वो माइनस दूसरा वाला टर्म जो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम टू राइट दिस वन, let me know. Now we have written that this work done is equal to, just as a difference of the kinetic energy from the different position, from the last position to the first position, and thus the work done by the force acting on a particle appears equal to the change in kinetic energy. That is we will write it as W12 is equal to 1 to integral 1 to 2, and F dot dr is equal to T2 minus T1 is known as the work energy theorem. I think it is clear to you people, and when I will ask in the examination, you will write it in the exact way. Conservative force and potential energy. What do you know about the conservative force? Anybody of you people? Conservative force. प्रियंका सिंह है क्या? Force which is path independent. प्रियंका सिंह है क्या? Yes sir. प्रियंका बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होता है वही कंजर्वेटिव फोर्स होता है. इसका मतलब क्या हुआ? पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स का इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई अर्थ होगा ना, पाथ इंडिपेंडेंट. अगर मान लीजिए एग्जाम में हमने भूल गया पाथ इंडिपेंडेंट. सर अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट से, मतलब 1 पॉइंट से मूव कर रहा है 2 पॉइंट तक, अगर वो सेम फिर से आ जाता है वहीं पे. पाथ इंडिपेंडेंट का तो मतलब है कि आप जो है मान लीजिए आपको गोरखपुर आना है और बलिया से आना है, तो चाहे आजमगढ़ होकर के इधर से आ जाइए, चाहे वो देवरिया से होके आ जाइए, 2 पाथ होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए. अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि फोर्स कंजर्व है या कंजर्वेटिव फोर्स है. तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इफ द वर्क डन that is W12 by the force means that starting from the point 1 to 2 we are doing a certain work by a force. Moving a particle from the point 1 to 2 is same for any possible path between the points. Then the force and the system is said to be the conservative, means that same force is रिक्वायर्ड है. यानी अगर दोनों रास्ते से आ रहे हैं तो दोनों का किराया समान हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा भाई कंजर्वेटिव है सिस्टम कंजर्वेटिव. फोर्स तो नहीं कहेंगे वहां कि क्योंकि सेम money we are paying to reach at a destination. Just I am giving the example, although this is entirely different to that. So if we are doing the work to reach from one point to other point by any possible path, amount of work is same, then the system is known as the conservative system and the force is known as the conservative force. Just I have drawn this picture here. From 1 to 2 we are doing the effort and we are having a particular force by a P and by a Q. We are reaching there and same force is there. Or you can say that if we are having our destination 2 and reaching towards the 1, then the same force will be there. And just I am giving it in the mathematical form also. But before that, let us have this line. The region in which the particle is experiencing a conservative force is called the conservative force field. That is the conservative force field. जिस रीजन में, जिस फील्ड में, जिस स्पेस में ये फोर्स ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहलाता है. From the above figure what we are getting here, that is the work done through the path P, that is 1 to 2 F dot dr by P is equal to the force that is Q
by a Q that is 1 to 2 F dot dr. Or we can say here, okay, if we are adding these two, then that should be equal to 0, and that is, you can say that the integral over the closed loop, that is F dot dr, that is equal to 0. Then such type of system will be the conservative system, and the force which has been used to work out this such type of problem or such type of system is known as the conservative force. Thus, if the force is conservative, the work done on the particle around a closed path in the force field is 0. This is very important and crucial definition, and you should always give this definition scientifically. Only in that situation you will be rated as a student of the PG. Otherwise, your definition will be insufficient. If the force is conservative, the work done on the particle around the closed path in the force field is 0. So this is the real definition, and how that can be explained, that has been given in the different equations which have shown on the last slide. In case of non-conservative force like the friction, the amount of work done around the different closed path are different, and that is not 0. So that is due to the friction or any other type of the hurdles. We may have the situation the same amount of the work is not there at the different path, and in the closed path of the different situation, the work is not 0 there. According to the Stokes theorem, अगर हम Stokes theorem क्या बताता है भाई? सोनू कुमार है क्या? सोनू कुमार? यस सर. स्टोक्स थ्योरम क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है? हमने बताया भी था इसके बारे में सर. अगर जो ग्रेडियंट सर स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम दो है ना? यस सर. और क्या है? एक ग्रीन थ्योरम भी है. स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब चीजें याद रखनी चाहिए आपको कि जैसे ये है कि देखो सीधे सीधे ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है. अगर आप इतना ही बता दीजिए तो दैट इज सफिशिएंट, बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू इलैबोरेट इट कि दैट in the closed path and the closed loop that the f dot dr is equal to the curl of the dot product of the force with the surface area. That is the Stokes theorem, especially in this particular case, although it is sufficient that the line integral can be converted into the surface integral by using the Stokes theorem. Agar if you are giving this type of answer, then that will be the sufficient for any scientific person. So here we are using this Stokes theorem, and for the conservative force field, integration over the perimeter of the area dr in the equation number 2 can be given as by right hand side 0 है तो obvious सी बात है कि इंटीग्रल के अंदर जो चीजें हैं वो 0 होंगी. अगर वो 0 होंगी तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल f dot dr is equal to the curl of f dot ds is equal to 0. Here, since ds is not equal to 0, because the certain surface area will be there for any closed loop, that's why the curl of f is equal to 0. Or you can say it as that the cross product of the this vector operator, that is the nebula cross this f, that is equal to 0. The force is expressed as f is equal to negative gradient of potential. And here we will write it as negative gradient of potential. Here we have written this I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, that is operated on v, and that's why the v has been multiplied in all the vectorial component of del, and that's why this become I del v upon del x plus j del v upon del y plus k del v upon del z.
ये एफ की वैल्यू हो गई। एफ को क्या कहते हैं? एफ इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एफ। इसका कोई एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जानते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिकल फील्ड, potential and force, Electrical there is potential energy, sir. yes, that is the, if you will write, actually many times what happened there ki when you are handling the numerical problem related to the electric field, then that is very difficult to solve that, because in solving the problem related to the electric field direction and mod value, that is the this numerical value that both has taken into the consideration. But if you will convert it into the negative gradient of the potential, in the potential especially, then the potential will be the scalar quantity and you can solve the problem easily. That's why many times that has been used there. Anyway, now the cross product of the force as well as of this this operator, vector operator, then you will write it as, you will see here that how we are getting this one, how we are getting this one. धारणी कैसे हमें ये मिल रहा है राइट हैंड साइड इसका ब्रैकेट का, इस एक्सप्रेशन का? So we have taken curl of force, and force is this gradient of V. So we have taken curl of force. जी, तो ये एकदम यू कहे जैसे डिटर्मिनेंट में आई जे के, उसके बाद जो फोर्स वाला ऊपर है हम देख रहे हैं इसमें डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल जेड, तीनों कंपोनेंट हो गए, और इसके आधार पर फिर इसका ऑपरेटर वाला पार्ट हो गया डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, और फिर इनका हम वेक्टर प्रोडक्ट लिए। अगर आप इस वेक्टर प्रोडक्ट को खोलें, अगर आप इस पे देखें तो इंडिविजुअल टर्म्स इसके साथ जीरो है। क्यों? क्योंकि एक थियरम है जिस थियरम के चलते डेल वी डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल जेड डेल वी। ये कोई थियरम है, याद है आपको कौन सी थियरम? किसी साइंटिस्ट के नाम पर है कि यानी नीचे का जो ऑपरेटर है उनका हम इंटरचेंज भी कर देते हैं तब भी उनकी वैल्यू सेम होती है। देखिएगा मैथमेटिक्स में एक इसका प्रूफ भी है उसमें देयर, especially if you will see in the क्या sir, on the basis of partial differentiation, I don't remember the name. हाँ, कुछ है, कोई एक थियरम मैंने पढ़ रखा था, एक्चुअली डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, उनके साइंटिस्ट के नाम पर था कि अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं और नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन के दोनों वेरिएबल हैं तो उनका एक्सचेंज भी बराबर ही होता है। That's why you will see that all the terms will be 0 and finally the right hand side is equal to 0, and hence we can have the value that the cross product of the del operator with the del of V is equal to 0. Taking the scalar product of dr with equation 5 and integrating between the limit 1 to 2, we get इक्वेशन नंबर 5 देखा जाए क्या है भाई, ये 5 इक्वेशन नंबर है। इक्वेशन 5 का यानी जो फोर्स का है हम क्या करना चाहते हैं, डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 to 2 के लिमिट में। तो क्या देगा जरा देख लो, 1 to 2 एफ डॉट डी आर, एफ के ऊपर भी वेक्टर होना चाहिए यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर देखिए एफ को, एफ की वैल्यू रखी गई। एफ की क्या वैल्यू रखी गई भाई प्रियंका त्रिपाठी, एफ की क्या वैल्यू रखी गई? ज्योति, एफ की क्या वैल्यू रखी गई? ज्योति सिंह सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल। एफ की जगह पे क्या लिखा गया? ग्रेडियंट ऑफ वी सर। ग्रेडियंट ऑफ वी, पोटेंशियल। थोड़ा सा गलती है इसमें,
साक्षी सिंह, Yes, क्या sir. गलती है इसमें? साक्षी नहीं है। Sir, she was absent. हाँ हाँ। अंबिका, ज्योति ने कुछ बताया, तुम बताओ क्या इसने छोड़ दिया? Obviously, in place of force, we have written negative gradient of potential. देखो माइनस साइन बाहर ले लिया गया है, Yes, yes, sir, yes, sir. तभी ये जो है आपने केवल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बताया। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ही तो फोर्स होता है, इसको हमने डिफाइन भी किया। तो इन प्लेस ऑफ एफ Yes. वी हैव रिटन दैट वैल्यू एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 to 2 we will have the dv and this is equal to, अब ये dv कैसे आ गया? dv अगर आप इसको देखेंगे, ये dv कैसे आया? कोई बताएगा इसमें से, आप लोगों में से? How we are getting that the minus times integral 1 to 2 dv in place of integral minus integral 1 to 2 del v dot dr? कोई बताएगा? Yes, Sir, sir. dr Because vector देखो को So because dx, gradient, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोलो। sir, धारिणी because बताओ तुम क्या बता रही थी? sir, because gradient is defined as d by dr. The reason we take del x, del y, and del z. So dr is we can not say cancel, but that will be moved and dv will be left. Sir, if we आकांक्षा are ये सही बोल रही? आकांक्षा Yes, sir. एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जब होगा, आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। जे Yes. का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? Yes, 1 sir. होगा। One. ऐसे ही के का डॉट प्रोडक्ट One. क्या होगा? 1 होगा। और ये तो dx dy dz है ही है dr वाला, और वो Yes. अपना वो दूसरा वाला 1 डेल बाई डेल एक्स है, Yes, sir. डेल बाई डेल वाई है, डेल बाई डेल जेड है। तो सब Yes. इसकी वैल्यू यूनिटी आ कैंसिल जाएगी। आउट हो जाएगा। Yes, कैंसिल sir. आउट क्या है? यूनिटी का ही आ Unity, जाएगा, yes, यूनिट। Yes, sir. And finally it will be minus 1 to 2 dv and this is equal to v2 minus v1. This is simple mathematics. Now if we assume the position 1 as infinity and the potential energy to be 0, there then the potential energy at a point r, that is the position 2, is given by this is equal to, ये कैसे है? ये एक्चुअली डेफिनेशन देता है पोटेंशियल की। ऑलरेडी you might have read in your lower classes when we were discussing the potential. So the potential can be written as the work done from infinity to that destination, that is known as the potential. So this particular expression gives the essence for the same. So thus from equation number 6, work done by the conservative force is equal to W12 is equal to 1 to 2 F dot dr is equal to V1 minus V2. And from the work energy theorem, the amount of work done by the force moving a particle from the position 1 to 2 is given by the change in kinetic energy, which you might have read, that W12 is equal to T2 minus T1, what already you have written there. And from the last equation, which has been mentioned in the equation number 8, we might have that W12 is equal to V1 minus V2. तो दोनों बराबर हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 8 और 9 को दोनों को बराबर किया गया। तो वी आर गेटिंग V1 minus V2 is equal to T2 minus T1, or we can write it as T1 plus V1 is equal to V2 plus T2, that is constant. Thus the sum of kinetic and potential energy, that is the total mechanical energy of a particle, remains constant in the conservative force field. This is known as the law of conservation of energy. Anybody have any problem? No, sir. Okay. No, sir. Now we are taking it in another form by using the Newton's law. Newton's law, second law से कैसे हम conservation theorem को justify करते हैं? So Newton's second law resembles the law of conservation of energy. If anybody asking that to justify that the Newton's second law resembles to the law of conservation of energy, then you have to do this exercise, that as we know that
the F is equal to MA, that is M into dV upon dt. There is no problem. Multiplying both the sides by V is equal to dV upon dr upon dt, and integrating it with respect to t, we get obviously we will have F dot dr upon dt, and we are integrating it by the with respect to t, plus a constant of integration we are taking here, say that is the E. Then this is equal to the m times dB upon dt into V times dt. ये कैसे आ गया भाई? ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो dr upon dt है उसको हमने V लिख दिया यहाँ पर, और t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हो रहा है. That's why we are writing this equation. Now we can write it as the integral over f dr, क्योंकि dt एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में we will have f dot dr plus E is equal to mv dv, and this is equal to half mv square. हाफ mv square, क्यों? हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. And finally what we are getting actually, E is equal to half mv square minus integral f dr, and you might have seen there that E is equal to half mv square plus V, and this is the value of work done actually, that is the F into dr, and this will be the potential energy, and thus we can write E is equal to T plus V is equal to constant. That's why you can say that this the Newton's second law of motion, or second law of motion, resembles with the law of conservation of energy again. There is another alternative method what I have seen and somewhere, then I wish to suggest our student that how alternatively we can prove this theorem. This theorem we can prove here. Just a witty technique I have taken into the consideration. F is equal to ma valid for the system with the constant mass. Yani as a system where mass is not varying with respect to time. Then we can write it as F is equal to m r double dot, that is m d2r upon dt2, or F is equal to m times dv upon dt, where this V is equal to dr upon dt. Now F is equal to m times dv upon dr into dr upon dt. हमने इसको सक्सेसिवली dr से इसमें डिवाइड भी कर दिया और इससे भाग भी दे दिया, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो पहले वाले टर्म को एज सच रख दिया, दूसरे टर्म को कुछ और लिखा जा सकता है. दूसरा टर्म क्या है? dr upon dt, that can be written as a V. So for one dimensional motion V is equal to dx upon dt, you might have read it here. Just that role has been played by the r, because this vector r is equal to x. Just to understand, just to set it in our mind that in x direction motion is there, then how we are defining the velocity. So here F is equal to mv. mv means m dr upon dt into dv upon dr. Let it is equation number A. And also F is equal to m dv upon dt. तो भाई अगर इस तरीके से है तो हम इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर V दोनों बहुत ही यूजफुल रिलेशन है. Although these are the different form of the same equation or the same thing. यानी F को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. F को लिख सकते हैं mv dv upon dr, और F को लिख सकते हैं हम m times dv upon dt. अब आइए इसका हम उपयोग करेंगे. कैसे उपयोग करेंगे? Let a mass m, that is a constant with respect to time, is moving from 1 to 2. Then the work done is equal to W12 is equal to 1 to 2 F dot dr. This is equal to 1 to. अब इसमें क्या किया गया? F की वैल्यू रख दी गई. F की क्या वैल्यू थी? F की दो वैल्यूज हो सकती हैं. F is equal to m times dv upon dt हो सकता है. F is equal to mv dv upon dr हो सकता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में दिखाया है. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है. यहाँ पर हमने F की एक वैल्यू रखी जो हमने अल्टरनेटिवली डिफाइन करी है. तो here we will have W12 is equal to m times
1 to 2 VDV। अब आप इसमें देखो DR और DR को अगर हम मान लें बैलेंस कर लेंगे एक को, तो हमारे पास आ रहा है M को बाहर ले लिए तो VDV आ गया। अगर हम इसको 1 to 2 में इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आएगा। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वी कैन राइट F डॉट डेल ऑपरेटर डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमने पहले से भी डिफाइन कर रखा है। हियर डेल ऑपरेटर इज I डेल बाई डेल एक्स प्लस J टाइम्स डेल बाई डेल वाई प्लस K टाइम्स डेल बाई डेल जेड। और F को डिफाइन किया जाता है, दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो दिस नेगेटिव इंडिकेट्स दैट V इज डिक्रीजिंग विद फोर्स। तो F दिस डेल क्रॉस F इज इक्वल टू, फिर वही वैल्यू रखी गई जो पहले हमने एक्सरसाइज करी है कि डेल क्रॉस डेल V एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 1 to W12 is equal to 1 to 2 F dot dr is equal to minus 1 to 2 del V dot dr, where dr is equal to dxi plus dyj plus dzk। इसको हमने डेलिबरेटली लिखा है, जैसे मैं इसके पहले बता रहा था कि कैसे ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो here we will have W122 that is equal to minus 1 to 2 del V upon del x into del x plus del V upon del y plus K times del V upon del z, and finally it will be equal to the minus 1 to 2 dV, and that is minus V2 plus V1. And from equation number 1 and 2, if we will balance or we will equate these, because both are the expression corresponding to the work done between the point 1 to 2. Then we will write half mv2 square minus v1 square is equal to minus v2 plus v1. And finally, if we will have the same quantity, quantity indicating at the same position on the either side, then we will have this expression, and this is exactly the conservation theorem, that is E is equal to T plus B is equal to constant. Now we will have the center of mass. Center of mass, 2-3 slides are more here, but I think I should stop here because Professor Dwivedi is waiting to you people to take the lecture. क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज पूछना हो, कोई समस्या हो तो आप बताइए, अदरवाइज हम लोग कल 9:30 बजे फिर मिलते हैं लेक्चर के साथ। बोलिए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो आपको? सर हाँ, वो जो आप वो पेपर रिक्वेस्ट कर रहे थे सर, वो मैंने सर गलती से कर दिया था। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो सोचे थे लाइब्रेरी बनाया आईडी, हाँ, मुझे लगा कि मतलब वहां से तो वो खुलेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट चला गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हम सोच रहे थे आप फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो साइंटिफिक अच्छी बात है, अच्छी चीजें हैं, ये कोई खराब बात नहीं है। रिसर्च गेट पे आप आए, ये अच्छी बात है। गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, ये अच्छी बात है। आप लोगों को और भी एक सजेशन है कि जैसे पिछले आपकी एक सीनियर थी, उसने एक विज्ञान विदुषी के लिए अप्लाई किया था, तो उसने टाटा के एक आध कोर्स किए थे, सपना यादव थी। तो और भी ढेर सारी स्कॉलरशिप्स आपकी हैं, ढेर सारी इंटर्नशिप है कि HRI है वहाँ इलाहाबाद का, और भी ढेर जगहों पे जो न्यूक्लियर सेंटर्स वगैरह हैं, उन जगह पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सर्च करिए नेट पर तो आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ट्राई टू एक्सप्लोर योर, डोंट बी जस्ट एज अ फ्रॉग ऑफ ए वेल। ऐसा रहेंगे तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। जो पीपल आर स्मार्ट एनफ एंड यू शुड डू for your betterment to search the careers rather than depending on anybody की फला बताएंगे जितना हम वही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे कि काची थ्योरम से इंटीग्रेशन बता दिया गया तो हम वही कर लेंगे, बस हमारा सफिशिएंट हो गया। तो that is not sufficient. Evaluate yourself, explore yourself and try to grab the things for your betterment, for your better career. That will be the great pleasure to me especially.
I will be very happy if you will get any opportunity and any such type of option and such type of extra feather in your cap of this academics. So that will be very much prestigious as well as very much कहते हैं ना कि honor to me also. Anyway, let us have the attendance of few people. Akansha Devedi. Present, sir. Amrita. Deepmala. Present, sir. Devesh. Devesh. Yes, sir. Dharini. हाँ ठीक है Present, ठीक है. sir. गौरव पांडे. Yes, sir. ज्योति. Present, sir. निधि. निधि तो आती नहीं है. साक्षी. साक्षी भी नहीं आई. अंबिका तो आई है. ममता आई है. ममता. Present, sir. मयंक. sir. हाँ ठीक है. मयंक. यस सर. प्रतिभा. प्रतिभा आई है क्या? प्रियंका सिंह भी आई हैं. त्रिपाठी भी आई है. प्रियंका. प्रियांशु. यस सर. रजनीश. सौरभ आए हैं. Yes. शिवम. यस सर. शिवम. यस सर. श्याम जी. यस सर. सोनू. यस सर. सुरभि. सुरभि. Yes, sir. सूरज. यस स्वाति. सर. तान्या. Yes, sir. स्वाति प्रेजेंट. हाँ ठीक है. वैभव. Yes, sir. विनय. Yes, sir. किंजल. अश्वनी. Present है. किंजल. किंजल और अश्वनी. यस सर. अश्विनी प्रेजेंट. किंजल नहीं है. चलो फिर. मयंक श्रीवास्तव. यस सर. चलिए ठीक. ओके, थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट Thank you, टुडे. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर.